Alhamdulillah, Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulil kareem wa alihi wa ashabihi ajma'in. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. I welcome all our esteemed panelists who have joined us from across the globe, taking their precious time out for a very noble cause of creating awareness and sharing their views on World Hijab Day. मैं हमारे तमाम खुसूसी मेहमान और मेरे मोहतरम माएँ, अजीज बहनें और भाइयों को जो इस पैगाम को दुनिया के किसी भी कोने में सुन रहे हैं, उनको इस वेबिनार में खैर मकदम करती हूँ. I welcome you all with an Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. आज वर्ल्ड हिजाब डे मनाया जाता है और इस दिन ये बताया जाता है कि हिजाब क्या है, उसकी अहमियत क्या है. लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हिजाब के माने क्या है. अगर हिजाब को मुख्तसर से समझाया जाए तो हिजाब के माने छुपाना या ढांपना. इसके अलावा हिजाब को मुकम्मल सादा लिबास भी इख्तियार करने को कहते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुस्लिम खवातीन से ये कह दो कि वो अपने ऊपर चादर से ढांप लिया करे. ये उससे ज्यादा बेहतर है कि वो सताई ना जाए. जिस तरह इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को हिजाब का हुक्म दिया है, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों को भी ये हुक्म दिया है कि जब कभी उनकी नजर औरतों के ऊपर पड़े, आप अपनी नजर नीची करें. ये मर्दों के लिए बेहतरीन हिजाब है. ये अमल आज से नहीं बल्कि 1400 साल से ये अमल चलते आ रहा है. अपने मजहब पर चलना और इस पर अमल करना और अपनी हिफाजत करना, ये इंसानी हुकूक है. लेकिन आजकल तरक्की और तक़वियत के नाम पर औरतों को बेपर्दा किया जा रहा है. हिजाब दीन इस्लाम के पैगाम और फख्र का बाइस है. हिजाब को चंद लोग आज एक मुद्दा बनाकर साजिश कर रहे हैं, जैसे हिजाब कोई तरक्की और तक़वियत के राह में रुकावट बन रहा है. हिजाब को चंद लोग आज एक मुद्दा बनाकर साजिश कर रहे हैं. एक साजिश के तहत औरतों की इज्जत और उसके विखार को छलनी किया जा रहा है. क्या ये सही है और क्या इसी को तक़वियत कहते हैं? आज मुस्लिम औरतें हिजाब करती है तो इन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि ये मुस्लिम खवातीन को एक अलग पहचान देती है. आज हिजाब की मुखालिफत की जाती है. हिजाब एक छोटा सा कपड़ा है जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर ये इस्लाम के दायरे में आता है, इसीलिए इनको तकलीफ है. इनको दीन इस्लाम से तकलीफ है. मैं इन तमाम नफरत करने वाले लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कटा सकते हैं सर अपना मगर ईमान ना छोड़ेंगे. कटा सकते हैं सर अपना मगर ईमान ना छोड़ेंगे. बेटियां उम्मते मुस्लिमा की कभी पर्दा ना छोड़ेंगी. हिजाब को एक हथियार बनाकर डराया जाता है कि ये तरक्की के लिए रुकावट है. ऐसे कौन से शोबे हैं, आप मुझे बताइए, कि जहां पर मुसलमान खवातीन हिजाब में रहकर तरक्की ना की हो. लेकिन हिजाब को एक अलग नमूना बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म है, कि ये इनके आजादी के राह में रुकावट है. लेकिन हकीकत में हिजाब औरतों के लिए जुल्म नहीं बल्कि औरतों के लिए मुकम्मल आजादी और तहफ्फुज का औजार है. हिजाब हमारे लिए एक पर्सनल चॉइस है और ये मेरा हक है. मेरी तालीम और मेरे मुस्तकबिल के दरमियान रुकावट कतई भी नहीं है. ये हमारे रब की तरफ से इताअत है और मैं इससे बाहर नहीं हूं. ये हमारा ईमान है. इस पर कोई एतराज करे
हमें मंजूर नहीं है, और हमें ये किसी को साबित करने या समझाने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क और यहाँ का संविधान मेरे मजहब पर अमल करने की हमें पूरी सी पूरी आजादी देता है। अगर कपड़े पहनना इंसानी तहजीब है, तो मेरे सर के ऊपर पहना हुआ एक छोटा सा कपड़ा तहजीब की सरबुलंदी को नुमाया करता है। अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है, तो वो जहालियत और वहशी जिंदगी की ओर वापस लौट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, World Hijab Day. For a Muslim woman who chooses to wear hijab, stands as a day when her choice is celebrated. When women from all over the world come together in solidarity, forming bridges of understanding and creating awareness and educating about the hijab. When I look around and see the wonderful panelists from across the globe, we understand the gravity and the need to observe such a day. To the Muslim women, hijab provides a sense of empowerment. It is a personal decision to dress modestly, according to the command of a genderless creator, to assert pride in self and embrace one's faith openly with independence and courageous conviction. Hijab isn't just a piece of fabric flung around the head. It is a mark of piety. It is an act of faith, a symbol for the world to see my obedience and my choice. I specifically like what Randa Abdul Fateh, an Australian writer, says about hijab, that too many people look at it as though it has some bizarre power sworn into its microfibers, powers that transforms Muslim girls into UCOs, unidentified covered objects, which turn Muslim girls from us to a them. Hijab isn't a threat or a sign of oppression. Neither it is an attire of the weak. Rather, it takes great courage to wear it than not to wear it. Hijab in no ways bears a representation on competency, skills, and intelligence of a person. But in today's current times and situations, it is heart-wrenching to see the discrimination and atrocities directed towards independent, strong, and confident women who makes this a difficult choice of donning the hijab. Never has a piece of cloth ever stood in the way of one achieving their dreams and fulfilling their ambition. We come from a land, India, where goddesses are worshipped. Yet, the most heinous and criminal of acts are targeted towards women. From auctioning women online or denying basic educational rights and harassing powerless individuals. When I look back at my childhood, I have fond memories of wonderful educators who truly paved the way for providing an environment barring any personal bias and judgment. But now, when I look at instances such as Udupi, India, where 8 students made a choice of wearing the hijab, were discriminated and were barred from entering their classrooms. Not just entering their classrooms, now they have been denied to enter even the compound of the college. This leaves us questioning the power of a will. I just want you all to pause and ponder about the turmoil an 18-year-old would, experience for choosing to be modest, getting denied the right to education, the excruciating pressure to give in the victims would have felt as they choose to wear the hijab. When I introspect, the ayah that comes to my mind is La ikraha fid deen, which translates, there is no compulsion in religion, whether to wear or not to wear, whether to cover or not to cover, cannot and should not be decided by educators in the least, as they are the custodians of expanding young minds' horizon and shaping their worldwide perspective and instilling self-confidence. Let's pause and think about the mental state of these vulnerable victims, the choices they have to make. Should I choose to be educated or should I choose to wear the hijab?
Is my educator right or my faith? I cannot fathom even for a minute how an 18-year-old should make such challenging life choices in a democratic country where freedom to wear, speak, think is a constitutional right. As I walk down my memory lane, I remember my hijab journey. I constantly questioned whether I actually had to wear it to proclaim my faith. My loving, supporting friends would question my decision. But gradually, my relatives, my friends who constantly questioned why I need to demonstrate my belief in a visual context, accepted and extended their support. But I remember battling thoughts as an 18-year-old. Should I wear the hijab? Should I really wear the hijab? Will my Lord hold me accountable? Am I really ready to submit even when it's not easy? And more of such questions. If I could actually time travel and tell my younger self one thing, I would definitely say that this decision of wearing the hijab is the most courageous decision of your life, and one that you should take absolute pride in. Even if 1% of the hijab wearing population wears it out of choice and the rest don't, that is a choice that needs to be accepted and respected, as my choice is my power. Coming from a convent background, it was heartwarming to see a nun wearing a headscarf, influencing and, encouraging young minds to be better humans and leaders. Yet in today's India, the same headscarf worn by Muslim women is looked upon as a sign of oppression by some. India is also known for being a democratic and a secular country. Yet the level of intolerance towards fundamental rights of what to wear, what to do, what to eat, what to say is questioned by the fascist forces and is used as a plot of torture. When we refuse to take a stand and allow oppression to continue, it gives way for a bigger problem to crop up. When in a country like India, what I eat gets questioned by few fanatics and becomes a life or death situation, and what I wear or what I choose to wear decides whether I qualify for a job or basic education becomes the norm, then we should really question that, are we truly democratic, or are we hiding behind the facade of being secular and a tolerant country? मैं तमाम बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे हालात में भी खामोशी इख्तियार करेंगे, इसकी जहरीला असर सिर्फ अब के मौजूदा वक्त पर नहीं बल्कि हमारे आने वाले नस्लों पर भी जाहिर होगा। वो चाहे सुली डील्स हो, बुली बाय एप्स हो, मॉब लिंचिंग हो, या अभी के जो स्काफ इशू हमारे मुल्क में चल रहा है वो हो। अगर वक्त चलते हम आवाज नहीं उठाए और इन चीजों को रोकने की कोशिश ना करें और गलत को गलत ना बोले, ऐसे गलत चीजें तक़वियत में आ जाएंगी। हमें ये समझना है, ये सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि हर एक आम हिंदुस्तानी भी इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हम इंसानियत के तौर पर नाकामयाब हो रहे हैं, और ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। एक औरत, एक माँ होने के नाते हर एक औरत का यही एक मकसद होता है कि वो एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल हमेशा बरकरार रखे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आल औलादों के लिए हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, खास करके हम जो औरतें हैं, हम माएँ भी हैं, हम जब एक स्कार्फ हमारे सिर पर ओढ़ते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मेरे औलादों को, मेरे बेटों को, मेरे बेटियों के अंदर ये ज़हनियत डालने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर से गलत चीज यही स्कार्फ, यही हिजाब के ऊपर अगर से सवाल उठा जा रहा है और मैं खामोशी इख्तियार करूंगी तो मैं एक गलत
आइडियोलॉजी मेरे औलादों के जहनों में डाल रही हूँ, ये हमारी नस्लों के लिए, सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए नहीं, आल औलादों के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक होगा। अगर से वक्त चलते हम लोग गलत को गलत ना बोल सके और इसके ऊपर आवाज ना उठा सके, सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इंसानियत की हैसियत से, ताकि हम तमाम लोग एक साथ एक जमहूरियत मुल्क में एक साथ मिलकर रह सके। अगर से हम लोग ये भूल जाएं कि ये सिर्फ एक मुस्लिम का मसला है, एक मुसलमान के हिजाब का मसला है, और आवाज ना उठाएंगे, तो सिर्फ हम लोग एक मुसलमान की तरह फेलियर नहीं है बल्कि पूरी हम लोग इंसानियत को ही शर्मसार कर रहे हैं, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक है। अगर से आज आप अपने सर के ऊपर का ये जो ताज पर सवाल उठाने पर खामोश रहेंगे, तो ऐसे वाक़ये हमारे मुआशरे में और भी आम होती जाएंगी, और वो वक्त दूर नहीं होगा जब नफरत को नॉर्मलाइज किया जाएगा और ऐसे वाक़ये और भी ज्यादा आम होती जाएंगी। Intolerance isn't going to impact just the present and now, but will have deadly consequences for each one of us in the future. Whether it is Suli deals or mob lynching, bully by, or for that instant, the hijab crisis that's going on in our country. If we don't raise our voices, call a spade, not just as Muslims, but as tolerant, sensible Indians, then we are failing as humans and not as communities. Then that's a big red flag for the future of how the country will shape. As a woman and a mother, each one of us aims at creating a safe and an optimistic perspective in whichever capacity. Especially as a mother, when I wear a scarf, I directly or indirectly influence the way my children, my daughter or son view women at large. And I don't take a stand, if I don't take a stand and call out when injustice is rampant, and specifically directed towards women wearing headscarf, then I am failing at instilling the right values and subtly influencing the way my children or the people around me in normalizing the injustice or intolerance. When we hustle together today, you and I don't do it for ourselves alone, but for us, for our children and the opportunities that will be available for them. We either control damage now or watch the future generation burn up in flames. पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। और मेरी प्यारी मुस्लिमा, आपको फख्र होना चाहिए कि आप हिजाब इख्तियार कर रही हैं और बखूबी कर रही हैं, क्योंकि आप और मैं ये बात जानते हैं कि हम खालिक के गुलामों को जवाब नहीं देते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खालिक को जवाब देते हैं। As Muslims, I want every sister to ponder. As Muslims, I want each one of you to take pride and truly feel empowered about the choice you have made. It takes absolute courage to be a UCO, unidentified covered object, as you and I both don't answer to the slaves of the Creator, but only to the Creator alone. With this, I take your leave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.